Okay, hey guys, what's up? I'm Hemraj and welcome you to classes. Okay, I'm Hemraj sir, and my topic for teaching is journal awareness, and in that banking awareness is the subtopic that we are going to cover. And in today's lecture, there is a brief introduction about me. I'm Hemraj Kablia, B Mechanical, post graduation diploma in taxation law, university topper, motivational speaker, good at public speaking, public relation and public speaking, interest in book reading and cricket and others. Okay, today we will discuss our syllabus of banking awareness. General awareness, three main component: banking awareness, current affairs, strategic. Okay, in that banking awareness and 2019 pattern as per SBI is the starting and then followed by LIC, RRB, IBPS, RBI, etc. Okay, by this way, SBI sets the pattern for the banking exam of that year and then it followed by the other banks. In 2020, we have a pandemic, so this pattern get distorted. Sources: daily banking, current affairs, and bankers adda is there for a monthly for daily basis and monthly reviews will be provided and I will provide you the monthly capsule on my channel. Okay, I will provide you the link. Banking awareness syllabus, let's begin. About banking history is the first topic. Banking history, in that you can also call it as the evolution of banks. We will start from the first bank in 1770s by Britishers to the evolution of RBI, that is formation of RBI. Okay, till that and nationalization of RBI. Then types of banks, in that cooperative banks, small banks, payment banks, scheduled commercial banks and others, and payment banks such as Paytm and other banks. Okay, now here is type of banking. Just have a look at. First, we will study the types of bank, and then we will study the types of banking. Okay, in that para banking, Islamic banking, universal banking, etc. Okay, so this is the way. Then we will study about the loans and NPAs. Okay, so loans and NPAs, that is non-performing assets, are very much in news nowadays. ARC, SARFAESI, National Company Law Tribunal, NCLT, etc. We will study. Then we will study about the foreign trade. In foreign trade, BOP, that is balance of payment, and other things we will study about the basics of foreign trade and how banking system affected. Types of payments, that is NACH, Bharat QR, UPI. In UPI, there is Unified Payment Interface. We will study about the concerning authorities, that is UIDAI, okay, and etc. All the payment types we will study and try and cover it. RBI and Monetary Policy Committee. So look at that RBI. Here we will cover from nationalization of RBI to till date. Okay. And Monetary Policy Committee, its formation, structure, its policy making, and how it affects the banking in India. Inflation. In inflation, there are various types. That is inflation, deflation, hyperinflation, or disinflation. So all we will study. Okay. And hyperinflation, the best example today is Venezuela, and before World War II, and the cause of World War II was hyperinflation. So we will go through the examples also. Okay, then we will study about the budget. Budget comes in the first week of the February month. So hopefully we will get cover it as soon as possible. Till Sitaraman ji provide us with this. Okay, तो हमारी जो भाषा होंगी इस पूरे कोर्स में वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होंगी, तो आप जिस भाषा में आपका समझना ज़्यादा आसान है उस भाषा में आप समझ सकते हो, और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों भाषाओं को साथ में लेकर के चलूँ. ओके, सो करंट अफेयर्स में हमें कवर करना है अबाउट अपॉइंटमेंट्स. जितने बैंक के अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाई हेड पोजीशंस पर, उन पर आपको ध्यान देना है. हमें ध्यान देना है एप्स और टाइप्स के बारे में. ये काफ़ी डायनामिक है तो इसको रेगुलर बेसिस पर करना काफी जरूरी है. गवर्नमेंट स्कीम्स, समिट्स, प्लेसेस एंड थीम्स. जैसे 2+2 मिनिस्ट्रियल समिट है इंडिया यूएस के बीच में अभी जस्ट रिसेंटली जो हुई थी, मतलब उसका थीम क्या था, वो कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ऑब्विचुअली हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स. ओके, ये तो यहीं पे कवर हो जाएगा हेडक्वार्टर ऑफ बैंक. देन फुल फॉर्म्स, दैट इज एब्रिविएशन. स्पोर्ट्स, कनेरू हम्पी केस. जैसे एब्रिविएशन तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है उससे इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं. जैसे कनेरू हम्पी, ये जो प्लेयर है एक ही स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, जैसे यहाँ पर चेस है, इसी तरीके से कोई और भी स्पोर्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं जो करंटली न्यूज में हो. ओके, है ना, जो कोई टेनिस प्लेयर का नाम दे दिया, यहाँ पर टेनिस का या बैडमिंटन का एग्जांपल दे दिया, तो आपको
पता होना चाहिए। विजिट्स के बारे में जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड अदर्स। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, अग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स, लोन्स। लोन्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोन्स एनपीएस हो रहे हैं, है ना। इससे रिलेटेड एक अभी फिलहाल में एक सुझाव दिया था ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी दिया था, और साथ ही साथ आरबीआई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने भी दिया था। उन्होंने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, तो हमें उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे ब्रीफली। लोन्स से कैसे लड़ना है और एनपीएस होने से उनको कैसे बचाना है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें। और ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस ना। मालाबार का भी एक्सरसाइज हुआ था, तो मालाबार पोर्ट, मालाबार का जो एक्सरसाइज हुआ था अभी इंडिया में, तो क्वाड कंट्रीज उसमें आए थे, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो उसके दो फेजेस थे। फेज 1 जो हुआ था वो हुआ था बे ऑफ बंगाल में, फेज 2 हुआ था अरेबियन सी में। तो ये सारी बातें आपको एकदम डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। मर्जर ऑफ बैंक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ समय पहले मर्जर ऑफ बैंक से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में कवर अप हुए हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में जानकारी लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। प्रीलिम के अंदर तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ सवाल तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है यहाँ पे मेंस के अंदर 30 to 35 क्वेश्चंस, 35% क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू मोस्टली आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर ही पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पर आपका कवर अप हो जाएगा। टाइम टू डेडिकेट, तो हम किस तरीके से लेक्चर लेके जाएंगे, 10 मिनट्स में आपको बैंकिंग अवेयरनेस का डिस्कशन, जो भी उस दिन का टॉपिक रहेगा वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद स्टैटिक जीके को हम लोग कवर अप करेंगे, और करंट इवेंट्स के अंदर जो रेगुलर बेसिस पे जो भी बैंकिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन चलेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो मैं हूँ हेमराज काबलिया, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक का लिंक है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो आकर के, ठीक है। और लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब टू माय चैनल HK क्लासेस, हेमराज काबलिया क्लासेस, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। हेमराज काबलिया साइनिंग ऑफ।